Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will discuss the next topic of the chapter, how do organisms reproduce, that is sexual reproduction in humans. Last session में हमने देखा था the mode of sexual reproduction in plants. इसी तरीके से today we will study about sexual reproduction in humans. First of all, humans have an age of adolescence which is counted from 12 years to 19 years of age. Adolescence वो period होता है जब बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अटेन्स सेक्शुअल मेच्योरिटी, दैट इज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के दे बिगिन टू मेच्योर. और इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स. ये जो चेंजेस होते हैं दे इंडिकेट दैट एन ऑर्गेनिज्म इज मूविंग टुवर्ड्स सेक्शुअल मेच्योरिटी. दीज चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. कुछ हॉर्मोन्स होते हैं बॉडीज में जो कि ये चेंजेस को कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन and females में estrogen is the hormone that controls secondary sexual characters. Let us study about few examples. For examples, in males, hair in genitals begin to grow. Genital areas and even armpits में hair growth होने लगती है. Beard and mustaches appear. Hoarse voice. There is an Adam's apple which is the voice box in males. We see enlargement in the voice box of males and the voice becomes hoarse. Pimples and acne usually appear on the face. There are also some common features in males and females, like pimples and acne also appear in females and hair growth in genitals is also seen here. Apart from this, growth of breasts is seen and menstruation begins. The process of menstruation will be discussed later on in this session. So these are the secondary sexual characters which appear in males and females at the time of sexual maturity, and these indicate that the reproductive organs are getting matured. So now let us study about the reproductive organs of males and females one by one. It represents the reproductive organs in males. There is a bladder which is the urinary bladder, and you can see there is a duct which is the urethra. Now these are the testes. Males have a pair of testes and these are the organs where sperm production takes place. Now sperm is the male gamete. As we have seen that pollens are the male gametes in flowers, similarly sperms are the male gametes in males and these are produced in testes just like pollens are produced inside the anthers. So the sperms produced by the testes travel through a duct which is called as vas deferens, and through vas deferens you can see that this duct is joining the urethra which is coming from the urinary bladder, and in the root there are certain glands like the prostate gland and the seminal vesicles which also secrete their juices inside the same duct. So sperms from the vas deferens, urine from the urinary bladder and secretions of these glands together pass through this common passage that is urethra. So you can say that the secretions from these glands and sperms mix up together and they form the semen. The secretions of these glands are useful for the nourishment and maturation of sperms. So you can say that urethra is the common passage for both the urine as well as the semen. Now you can see that this is the penis and this opens outside the body through urethra. Also you can see that testis is contained in an extra abdominal pouch which is called scrotum. Extra abdominal means it lies outside the abdomen. Now there is a reason behind this, as we know that the normal human body temperature is 37 degrees Celsius. However, sperms production के लिए जो normal temperature चाहिए that is slightly lower than 37 degrees Celsius. इसीलिए the testes are located inside the scrotum outside the body ताकि जो required temperature है वो attain हो सके for the sperm production. So this is the entire male reproductive system. Now let us focus on the female reproductive system. As you can see here, there are a pair of ovaries and these lead into the oviduct. Oviduct are also called as fallopian tubes. These fallopian tubes open into a common chamber which is called the uterus. You can see that there are thickened walls on the uterus. Now there is a cervix which is a clog-like portion which blocks the uterus, and then there is an opening vagina which further opens outside the body. This is the basic structure. Here you can see that there are ligaments which hold the ovaries towards the uterus. Now
ovaries are the organs which release the female gamete, that is the egg cell. Just like testis secrete sperms, ovaries secrete egg cell, which is the female gamete. Ovaries secrete egg cell which passes through the oviduct, then through the uterus. Now sperms from the male reproductive system enters the vagina and they travel upwards. Now we have to first understand the structure of a sperm. It contains a head, middle piece and tail. This tail shows whiplash movements which help in the movement of the sperm. Middle piece contains mitochondria. Mitochondria energy generate करता है sperm के movement के लिए. और head portion में nucleus होता है, कुछ chemicals होते हैं. ये main part होता है. When sperms travel up the vagina into the uterus and then into the oviducts, here the sperm meet the egg cell and fertilization takes place. That is, fusion of the sperm with the egg cell is called fertilization. During fertilization, यहाँ पर जो head part है, जो chemicals हैं, वो egg cell के contact में आकर कुछ chemical changes करते हैं और finally जो nucleus है स्पर्म का, इट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल. तो एक सिंगल सेल बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. इसी तरीके से हमने प्लांट्स में भी देखा था कि पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट्स जब एग सेल से फ्यूज करते हैं तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. नाउ यहाँ पर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज सिंगल सेल, तो इट कीप्स ट्रैवलिंग अलोंग द ओविडक्ट. During this time cell division takes place और single cell zygote multi celled embryo में convert हो जाता है. This embryo gets implanted into the walls of the uterus. Whenever egg cell is released, uterine walls becomes thick. ये जो thickening होती है walls की, ये blood vessels से supplied होती है and ये एक तरीके से uterus की preparation होती है to receive the incoming egg cell ताकि उसको nourishment provide किया जा सके. So the growing embryo then gets into the walls of the uterus. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं. प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जो मदर के यूट्राइन वॉल को एम्ब्रियो से कनेक्ट करते हैं. ये जो प्लेसेंटा होता है, इट हैज़ विलाई, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऑन द एम्ब्रियोनल साइड. तो प्लेसेंटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग चाइल्ड. यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर्स ब्लड से जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं वो फीटस तक जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, हॉर्मोन्स हो गए या अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए. और फीटस जो भी वेस्ट जनरेट करता है बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, तो वो वेस्ट भी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस से मदर के ब्लड में जाते हैं एंड फाइनली मदर के एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो इन दिस वे प्लेसेंटा हैज़ अ very important role. After implantation of the embryo into the uterine wall, the female is said to have attained pregnancy. Now this fetus grows and develops, but there is a difference between embryo and fetus. Embryo is a multicellular structure और you can say a ball of cells. यही embryo में जब different body parts appear होने लगते हैं, for example head distinctly visible होता है, upper and lower limbs अच्छे से visible होते हैं, तो उस स्टेज में एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज फीटस. तो हम कह सकते हैं कि फीटस इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो. देयर इज अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 months इन ह्यूमन बींग्स. जेस्टेशन पीरियड मतलब एक जाइगोट को एक फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड बनने के लिए जो टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, दैट इज 9 months. और जब फीटस फुल्ली डेवलप होता है तो हार्मोनल चेंजेस से यूट्राइन वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं विच फाइनली डिलीवर्स द बेबी आउट ऑफ द फीमेल बॉडी. नाउ दिस इज अबाउट द फीमेल स्ट्रक्चर. वी हैव स्टडीड कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होते हैं. बट सपोज फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, उस केस में क्या होता है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट. नाउ it is a rule that one of the ovaries will secrete the egg cell every 28 to 30 days. So the egg cell will travel here and the uterine walls will become thick for reception. But if the egg is not fertilized, then the egg cell, the uterine wall breaks
and the blood vessels which are supplying the uterine wall also breaks, and these are shed out of the body of the female, and this is called as menstruation. Menstruation lasts for 2 to 8 days and it occurs every month whenever an egg is released and it is not fertilized. So this is the menstruation that we have also talked about in secondary sexual characters of females. Now, apart from this, as we have now discussed about the sexual reproduction in humans, but there are certain things that we have to keep in mind. Although at the age of 12 to 13 years, the body of the organisms are capable of reproduction, but the body is physically and mentally not prepared to bear the responsibility of child. Therefore, there are certain rules and regulations regarding marriage. For example, females should not be married before 18 years of age. Similarly, males should not be married before 21 years of age. Also, there are several sexually transmitted diseases, STDs, such as HIV, AIDS, gonorrhea and syphilis, which are transferred due to the sexual act and through sexual fluids. Now, HIV is the virus, human immunodeficiency virus. This virus when enters into the body, it weakens the immune system. जब body का immune system weak हो जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे diseases body easily catch करने लगते हैं, और ऐसे ही कई सारे diseases जब accumulate हो जाते हैं तो it results in AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. So we need that we should control the spread of STDs, and also there are certain aspects because of which sometimes we may not want the child, or for population growth and for the inhibition of population growth there are several methods of contraception. Contraception simply means that we inhibit the sperms from meeting the egg cell and we inhibit the implantation of the embryo. So first is the physical method. Physical method में simply हम एक mechanical barrier create करते हैं to inhibit sperms from reaching the eggs. This can be done with the help of condoms which are available for both males and females. Physical method बहुत ही important है for preventing the spread of STDs. Other is the chemical method which occurs by the changing of hormones. बहुत सारे hormones change करके हम activities को change कर सकते हैं. For example, यहाँ पर implantation को prevent कर सकते हैं, या फिर vaginal या cervix को हम sperms के लिए non accommodative बना सकते हैं, जैसे कि कुछ ओरल पिल्स होते हैं जो ओरली मेडिसिन्स की तरह लिए जाते हैं, या इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं जो केमिकल्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं. कॉपर टी एक लूप होता है कॉपर का विच कैन बी इंसर्टेड इनटू द वेजाइना. ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो या तो स्पर्म्स को किल करते हैं या फिर उनकी मोटिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं. विद ऑल दीज मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी अटेन्ड. अनदर मेथड इज सर्जिकल मेथड, यानी कि सर्जरी से, फॉर एग्जाम्पल वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी रेफर्स टू सपोज यहाँ वास्ट डिफरेंस को कट करके यहाँ पर टाई कर दिया जाए तो स्पर्म्स डेफिनेटली आगे पहुँच ही नहीं पाएंगे एंड दिस विल इनहिबिट दी स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग दी egg cell. Similarly, there is tubectomy. Tubectomy में oviducts को हम कट करते हैं and these are tied. तो now egg cell will not be able to reach the uterus. तो इस तरीके के surgical method से भी contraception can be attained. Finally, हम बहुत सुनते हैं about female feticide. Feticide means killing of the fetus. यूजुअली एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जिससे द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर इट्स बर्थ इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर. और यूजुअली लोग फीमेल्स फीटिसाइड करते हैं बिकॉज दे आर इन वांट ऑफ अ मेल चाइल्ड, बट दिस इज अ बैड प्रैक्टिस बिकॉज इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड कि मेल एंड फीमेल के बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है एंड वी शुड नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंसेज. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक you can also refer to our book of DNA Education, Key Point Science Class 10th. Hope this helps. Thank you.